Namaskar दोस्तों. Good evening. I'm Purnima from Fertility Dost. I welcome you all on our interesting session. आज हम बात करेंगे कुछ एम्ब्रियोज के बारे में, ट्रांसफर के बारे में, इम्प्लांटेशन के बारे में. हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि वी शुड हैव गुड गैमीट्स, वी शुड हैव गुड सीड्स एंड ऑब्वियसली द सॉइल शुड आल्सो बी गुड. बट जो वो सीड बन के हमारे यूट्रस में आ रहा है, उसके लिए कौन सी कंडीशन ऐसी है जो बहुत फेवरेबल है, कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जो फेवरेबल नहीं है. एंड नाउ अ डेज वी आर मच इनटू दिस फ्रोजन साइकिल ट्रांसफर और फ्रेश साइकिल ट्रांसफर. बिलीव मी, व्हेन आई थिंक 16 और 17 इयर्स बैक जब मैं आईवीएफ करवा रही थी तो फ्रोजन तो कभी सुना ही नहीं था. डॉक्टर ने थर्ड डे बुलाते थे एंड वी जस्ट वेंट फॉर दिस फ्रेश साइकिल ट्रांसफर. कुछ सालों बाद जब सुना फ्रोजन तो लगा ओ गॉड, दिस मस्ट बी अ गुड थिंग. पहले क्यों नहीं था? बिकॉज nowadays we are just hearing about this कि फ्रोजन ट्रांसफर है तो आपका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है, फ्रेश है तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें कम है. बट क्या सच में ऐसा है? हमारा फ्रोजन ट्रांसफर और वी कैन से दैट फ्रेश ट्रांसफर डज इम्पैक्ट द परसेंटेज ऑफ इम्प्लांटेशन, or we can say that percentage of success is depending upon this thing, frozen transfer or fresh. बहुत सारे डाउट्स हैं. कुछ लोगों को लगता है कि डॉक्टर ने अगर फ्रेश ट्रांसफर बोल दिया तो क्यों बोला, बिकॉज मेरी फ्रेंड को तो फ्रोजन ही बोला था, तो मेरे चांसेस कम हो गए क्या? सो बहुत सारे ऐसे सवाल, वी कैन से दैट मिथ्स, डाउट्स, बहुत ऐसी चीजें विच वी रियली वांट टू डिस्कस विद अ डॉक्टर, बट एट टाइम्स वी जस्ट फॉरगेट इट. या हमको लगता है छोड़ो, गूगल से पता चल जाएगा. लेकिन नहीं, आज हम ये सब बातें बहुत सीनियर डॉक्टर के साथ डिस्कस करेंगे, वेरी नोन नेम ऑफ दिल्ली एनसीआर. और आप बस इस सेशन में रहिएगा और आपके जितने भी सवाल, डाउट्स, जितनी भी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं रिलेटेड टू दिस ट्रांसफर, आप प्लीज उसको जरूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा. वी डू हैव मेनी क्वेरीज फ्रॉम योर साइड ऑन आवर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, एंड इफ यू रियली वांट टू आस्क some of the pointers, कुछ ऐसे सवाल जो आपको लगता है फेसबुक लाइव में आके आप नहीं पूछ सकते, तो प्लीज डोंट हेजिटेट एंड सेंड माय टीम, और you can message me personally also and I'll just ask you a query from the doctor. So viewers, please आप इस सेशन में आ जाइए, बिकॉज आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही नॉलेजेबल है. एंड दिस सेशन, फॉर दिस स्पेशली फॉर दिस सेशन, आवर नॉलेज पार्टनर इज ART Fertility Clinics. So we are inviting very senior doctor from ART Fertility Clinic, Gurgaon, Dr. Meenakshi. So let's call her on the main screen and start with the session. Namaskar, doctor. Welcome to Fertility Dost. So viewers, today we have very senior doctor with us, Dr. Meenakshi. She's from ART Fertility Clinic, Gurgaon branch. And many of our Delhi NCR people must have visited her and zarur unko success mila hoga. Dr. Meenakshi is a clinical director at ART Fertility Clinics, Gurgaon. She has been doing this tremendous work in infertility area for the past 18 years. And she's a member of many associations, and she also co-authored many research papers and books. And her area of interest, जो कि I think maximum viewers का आजकल है, are poor responders, because we know low AMH and all that, these cases are just on higher level, we can see. She also deals with recurrent implantation failure. That's why we just selected the topic for today is which one is better, frozen embryo transfer or fresh embryo transfer. So over to you, Dr. Meenakshi. We all know कि ये लड़ाई चलती रहती है फ्रोजन ट्रांसफर और फ्रेश में, बट एक्सपर्ट कमेंट फ्रॉम योर साइड. Yeah, it's become actually nowadays a very, whenever a patient comes, she comes and tells me ki I want only frozen transfer, I don't want a fresh transfer. Everybody thinks that frozen gives you the better result than fresh. So let me start with, first I'll tell you what is fresh transfer and what is frozen transfer. Fresh transfer, jaise ki name says, we are making the eggs, we are making embryos, and in the same cycle we are doing a transfer. It can be done on any day, day 3, day 5, any type of transfer you can have, but it is without
freezing it, we are just transferring. That is fresh transfer. Frozen transfer is we stimulate you, we take the eggs out, we make embryos, and then we freeze it. And maybe a month later, 2 months later, or when your body is ready for a pregnancy, we transfer 2 embryos out of the lot, and then we wait for the pregnancy to happen. So that is frozen, where the embryo has been frozen. So this is something. There are conditions where we are preparing, say if we take donor and we are preparing her eggs, and then we have a patient whom we are preparing a uterus. So for her, that whatever injections we have given, that effect is not going to come in this other lady whom we are preparing uterus. So for her, fresh or frozen is the same thing, because there is no impact. Why we are worried about, say, frozen transfer, why we feel the frozen is better? It's not that actually it is better. It is just the patient selection has to be better. We have to individualize the treatment. Everybody cannot be benefited by frozen transfer, and everybody cannot be benefited by fresh transfer. Both are equally good if we can select our patients better. So I'll tell you some of the indications where frozen is better and why fresh actually why the chances get hampers. So the first thing is, say we have a patient who's polycystic ovaries. She has multiple eggs, बहुत सारे 15, 20, 25 egg उसमें बन जाते हैं, and every egg is secreting a hormone. That hormone affects the uterine lining. It helps in preparing lining, but it affects the uterine lining. And if you know that there in human uterus there is something called window of implantation. कुछ ही दिन होते हैं जिसमें एम्ब्रियो जाके चिपकेगा तो प्रेगनेंसी हो सकती है. अगर उससे 2 दिन आगे 2 दिन पीछे डालेंगे तो एम्ब्रियो नहीं चिपकेगा. When we are giving so many hormones to the patient, the hormonal level changes because of the multiple eggs, and that affects the window of implantation. किसी में window of implantation पहले खुल जाती है, किसी में बाद में खुलती है. इसकी वजह से जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हम day 3, day 5 ट्रांसफर कर रहे हैं वो मैच नहीं होता, and that is why fresh transfer fails in these patients. So patients who have polycystic ovaries, first reason because of high estrogen content, the window of implantation may be shortened और इसीलिए उसमें fresh fail हो जाता है. दूसरा, they are making so many eggs, we are worried about ovarian hyperstimulation. कि हम इसी में अगर प्रेगनेंसी भी हो गई तो there is a complication called ovarian hyperstimulation, which can be completely prevented by doing a frozen transfer. PCOS पेशेंट में हम पहले एग्स बनाएं, एम्ब्रियो बनाएं, फ्रीज कर दें. जब ओवरी साइलेंट हो जाए, हार्मोनल इफेक्ट चला जाए, शी इज परफेक्टली ओके, मे बी अ मंथ और 2 इट माइट टेक, and then we just prepare the lining, give minimal hormones and do a transfer. So we can improve from fresh, which was in a PCOS say 10% pregnancy rate, by doing a frozen transfer it becomes 65%. This happens in PCO, but not in all cases. If we talk about poor responders, she is forming only 2 eggs. The hormonal level is minimal. In those cases, even fresh may do better. But the other advantages of frozen is we can collect the embryos. In poor responders, we can do fresh if the embryo is good. But if you want to collect embryo, she's forming only 1 embryo, we can freeze embryos and check which is healthy, unhealthy, and then do a later transfer. So the subsequent cumulative success actually increases. Then patients who are going for cancer, treatment, we want to do fertility preservation for them. We'll be freezing their gametes for say 5 years, 10 years. Those patients will have to go for frozen transfer. They cannot go for a fresh transfer. So in those cases, it really helps. अभी vitrification is the method which we use for freezing. उसकी वजह से the vitrification technique has improved so much that the fresh and frozen have equally good pregnancy rates, provided we have selected the patient properly. Right. So we can say that protocol and the selection of the method, whether it is frozen or fresh, it depends on individual. And obviously, doctor is the best person to decide your protocol. Dr. Meenakshi, then also, एक लोगों का, I don't know whether it is a myth or reality, but लोगों का मानना है कि frozen में
80% सक्सेस रेट है, फ्रेश में सिर्फ 10% ही है. इज इट रियली सो? It's again, I said it is not so. Fresh में भी अगर सिलेक्शन आपकी अच्छी है, we do hormones during the stimulation multiple times, so that will tell whether your hormones are rising correctly or not. There is something called serum progesterone which we do on the day of the trigger. अगर वो नॉर्मल रेंज में है हम फ्रेश कर सकते हैं, अगर वो हाई है तो हम फ्रेश नहीं कर सकते. अब अगर कई सेंटर्स में दे जस्ट डोंट चेक, दे डू अ ट्रांसफर, और अगर वो फेल हो जाता है तो पेशेंट को लगता है फ्रेश की वजह से फेल हो गया है, पर ऐसा नहीं था. अगर वो ठीक से मॉनिटर करें, कंट्रोल करें, देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स व्हिच वी हैव टू सी. इफ पेशेंट फॉल्स इन दैट कैटेगरी वी कैन डू अ फ्रेश ट्रांसफर. एडवांटेजेस ऑफ फ्रेश ट्रांसफर इज कि आप यू आर गेटिंग प्रेगनेंसी अर्ली, आपको 1-2 महीना वेट नहीं करना, कॉस्ट ऑफ फ्रीजिंग you save, and third, whatever said and done, artificial ways are artificial, minimal invasion is always good. So जितना जल्दी होगा उतना अच्छा है. And IVF is a new science, 25-30 साल पुरानी है, तो we all are also learning and improving over the years. 40 साल पुरानी है, 25-40 साल पुरानी है, तो उस हिसाब से तो we are also improving. But yes, now we can, what I can say as an IVF specialist is, be rest assured, if we are asking you to freeze your embryos and we'll go for a frozen transfer, the pregnancy rate is same, there is no harm. And if we feel no, fresh is better for your case, that is also equally good. It is not that frozen is always better or fresh is always better. Always, right. We have one query over here related to this fresh and frozen. So she's saying that after 2 frozen failures, my doctor is now suggesting to go for fresh transfer. So does it really going to help me? Again, it depends how did they prepare the endometrium. For frozen transfer also, there are 2 ways to prepare endometrium. One is in the natural cycle, another is in which we give hormones. अब नेचुरल साइकिल या फ्रेश ट्रांसफर का ये एडवांटेज रहता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉर्पस लूटियम, जिसमें से मतलब फॉलिकल जिसमें से एग निकल जाता है उसके शेल को बोलते हैं कॉर्पस लूटियम, विच सिक्रीट्स हार्मोन एंड सपोर्ट प्रेगनेंसी. नॉट जस्ट प्रोजेस्टेरॉन विच इज द मेन हार्मोन, मेनी अदर हार्मोन्स आल्सो. और इस वजह से देखा गया है कि नेचुरल साइकिल में कई पेशेंट्स को प्रेगनेंसी होती है, लेकिन अगर यही हम हार्मोन्स देके लाइनिंग बनाते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होती है. So in her case, I don't know what preparation they have used for frozen embryo transfer. If it was HRT, FET, if she has taken hormones to prepare endometrium, then my suggestion would be to go for a natural cycle transfer. That might help her. She needs that extra hormones which are not being supplemented, which cannot be supplemented in an HRT cycle. Okay. So Dr. Meenakshi, again, what exactly is this natural cycle transfer? Because we have seen many cases where we have queries related to this कि जब नॉर्मल था तो एंडोमेट्रियम थिकनेस बहुत बढ़िया थी, जैसे ही डॉक्टर ने इंजेक्शंस शुरू किए सब खराब हो गया. So is this really related to this natural cycle transfer? Some patients, they don't respond to the hormones what we expect. So in those cases, minimal, I think interference is always better. Patients who have regular cycles, who are young, less than 40 years of age, they are forming egg properly. In those cases, can be selected as in natural cycle transfer. Women who are going for donor egg, they are not forming egg. That is why they are going for donor egg. So they cannot be taken for natural cycle. Women above 40 years cannot be taken for natural cycle. Women who have polycystic ovary because they don't form egg properly, so in them also it is difficult to go for natural cycle. But other group, women, normal women can be taken. What we do in that is, for first 14-15 days she doesn't have to take any medicine. That's the best part of it, I feel, from a patient perspective. All she has to do is she has to come for ultrasound and some blood test. हम कोशिश क्या करते हैं, नेचर जो एंडोमेट्रियम प्रिपेयर कर रहा है, अगर आप फिजियोलॉजी में देखोगे, एग बनता है, एग हार्मोन रिलीज करेगा और वो हार्मोन यूट्रस पे एक्ट करता है यूट्रस को प्रिपेयर करने के लिए. मतलब इफ एग इज गेटिंग रेडी, इट इज टेलिंग यूट्रस यू आल्सो गेट रेडी, हो सकता है प्रेगनेंसी हो जाए, उसके लिए एंडोमेट्रियम रेडी हो रही है. एंड दोनों नेचर की तरफ से
ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो हम लोग दे ही देते हैं नॉर्मली, बट उसके अलावा भी देयर आर सो मेनी स्मॉल हॉर्मोन्स लाइक VEGF फैक्टर, रिलैक्सिन हार्मोन, ये सब जो कि नेचुरल वे में ही आते हैं, हम लोग उसको सप्लीमेंट नहीं कर सकते. तो जब एग रिलीज हो जाता है नेचर की तरफ से, एंड द डे ऑफ रिलीज, फ्रॉम देयर वी काउंट 5 days एंड देन वी डू अ ट्रांसफर. बेसिकली उसमें जब बॉडी आपकी रेडी है ट्रांसफर के लिए, हम एग्जैक्टली उस टाइम को कॉपी कर रहे हैं, तो उससे प्रेगनेंसी का चांस बेटर हो जाता है. नॉर्मल लोगों में जिसमें सिर्फ मेल फैक्टर था, ट्यूबल फैक्टर थोड़ा था, यंग लड़की है, एग रेगुलर साइकिल्स है, उसमें it works beautifully. She has to take very less medicine before and even after the transfer, and the chance of having a successful pregnancy is better. Chance of having hypertension during pregnancy is much less in natural cycle compared to HRT cycle. So it is better in a way. Right, but again the selection of patient depends on different parameters, right? Dr. Meenakshi, very common question is implantation bleeding. क्या सच में ऐसा कुछ होता है? Because बहुत बार हमने सुना कि we have different queries related to this कि implantation bleeding ही नहीं हुआ तो embryo implant कैसे होगा? या कुछ लोगों ने बोला कि towards the end of 14 or 15 days of that waiting period मुझे तो implantation bleeding हुआ था. So is it really this word implantation bleeding, या हमने सबने कुछ ना कुछ बना दिया है इसका? नहीं, there is something called implantation bleeding, and it does happen usually after 8th or 9th day of embryo transfer, usually somewhere that time. Some spotting, maybe one spot or something will happen, but there is no way to prove that it is implantation bleeding at that time. So if it is implantation, very good, but there are other causes also for bleeding. कई बार क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स एकदम ड्रॉप कर जाते हैं. मान लो आपने नेचुरल साइकिल या फ्रेश ट्रांसफर किया था, थोड़े से ही हार्मोन दिए और बॉडी ने हार्मोन बनाने बंद कर दिए, तो इसलिए लेवल्स ड्रॉप हो गए, तो उसको ब्लीडिंग हो सकती है. या आपने जितना हार्मोन अगर दिया है, इट इज नॉट इफेक्टिव इन हर टू मेंटेन प्रेगनेंसी, तो ब्लीडिंग हो सकती है. तो इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल रहता है. We take it in a positive way, this is implantation, but we treat it as if the hormones are deficient. So if a patient comes to me after the embryo transfer कि implantation, मेरे को spotting हुई है या थोड़ी सी bleeding हुई है, तो मैं treat तो ऐसे ही करूंगी कि hormones कम है, but hope करेंगे कि हाँ वो implantation है, और वो जब test होगा तभी पता लगेगा. Right. So we can say that yes, you can use this word implantation bleeding, but अगर हम scientifically या वैसे देखें तो there's no proven fact on that. Dr. Meenakshi, another query we have related to symptoms of implantation. One is implantation bleeding, और दूसरा कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि we are feeling this peculiar kind of cramps in lower abdomen, कुछ अलग सा फील हो रहा है. Is it really due to progesterone levels or again implantation है? ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है. I've seen people having this pain even after pregnancy, 5 weeks, 6 weeks, 7 week में भी कुछ डिस्कम्फर्ट सा, menstrual kind of a pain कि अभी menses आ जाएंगे, ऐसी फीलिंग आती है, and they get scared. इसके कई रीजन हो सकते हैं. विद हार्मोन्स कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाती है, गैस बढ़ जाती है पेट में, उसकी वजह से भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है लोअर एब्डोमेन में. इफ दे आर स्ट्रेनिंग टू पास मोशन एंड दे हैव अ फिशर और समथिंग, फिर भी बिल्कुल मतलब मेंसेस वाला पेन हो सकता है. और यस, एक बार विदाउट एनी रीजन प्रेगनेंसी हो रही है, ठीक भी ये दर्द हो सकता है. ओके, राइट. So there could be many reasons, but हम इसको properly ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई आपका pregnancy से related ही indications हैं. And usually what we do in such cases, we do serum progesterone levels. अगर serum progesterone level अच्छा है, normal चल रहा है, 30-40 के ऊपर है, तो we just reassure the patient कि don't worry, there's nothing going wrong with the pregnancy, it may be something else. If the progesterone levels are very low and she's feeling such pain, then we increase the dose of progesterone. So that helps. That's how we differentiate.
whether it is, causing any harm to pregnancy or not. Right. And what about this 15 days का जो टाइम पीरियड है? बहुत सारे लोगों का मानना है कि जस्ट आप लेटे रहिए, बिल्कुल रेस्ट पे रहिए, एंड नो डाउट डॉक्टर्स यूजुअली सेज कि प्लीज कैरी ऑन विद योर नॉर्मल रूटीन, अपना काम कीजिए, बिकॉज यू रियली नीड टू गेट बिजी विद सम वन और द अदर थिंग. बट हमें लगता है कि उठ गए, चल पड़े तो कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा हमारे एम्ब्रियो के साथ. सो एज एन एक्सपर्ट, as a specialist, what you advise on this wide forum कि क्या करना चाहिए सच में during those 15 days? और एक चीज और डॉक्टर मीनाक्षी, क्या हम इस 15 डेज को कम नहीं कर सकते? ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब हमें वेट करना होता है. 12 दिन तक ला सकते हैं, पर उससे कम नहीं कर सकते क्योंकि पता नहीं चलता. पर वेट उतना ही रहेगा फिर भी. खैर, तो 14 दिन इज आइडियल. 14 डेज में अच्छे से वी कैन आइडेंटिफाई. अगर लेट इम्प्लांटेशन है तो भी पता लग जाएगा. एंड कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ बेड रेस्ट, इसके ऊपर बहुत बड़ा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं जिसमें बेड रेस्ट वर्सेस नो बेड रेस्ट के ऊपर स्टडीज हुई हैं. प्रेगनेंसी रेट दोनों ग्रुप में सेम है. द आइडिया इज ओनली टू गिव रेस्ट टू द वुमन अगर शी वॉज वर्किंग वेरी हार्ड बिफोर दैट. एंड सेकेंड थिंग, उसमें क्या कहते हैं, मतलब अगर बेसिकली टू कीप हर डी स्ट्रेस्ड. अगर ऑफिस जाके बहुत स्ट्रेस हो रहा है, लेट हर टेक लीव एंड स्टे एट होम एंड एंजॉय. अगर घर पे रह के स्ट्रेस हो रहा है तो बेटर टू गो टू ऑफिस. मतलब शी हैज टू जस्ट कीप हरसेल्फ काम, नॉट टू थिंक अबाउट IVF एंड बेबी एंड एवरी लिटिल मोमेंट विच इज हैपनिंग इन हर टमी. वो सारा दिमाग उनका ना वही, थोड़ी सी यहाँ हुआ है, नहीं अभी ये हो रहा है. वो उस चीज से थोड़ा सा, आई अंडरस्टैंड इतना लंबा प्रोसीजर होता है, इतने इंजेक्शन लेते हैं, इतनी होप्स भी होती हैं, बट थोड़ा सा ना जस्ट टेक इट विद अ स्ट्राइट कि नहीं, मेरे को दवाई खानी है एंड दैट्स इट. मेरा काम हो गया, मैंने जो काम करना था अपना किया है, रेस्ट गॉड हैज टू नाउ ब्लेस. सो आई थिंक थोड़ा सा उससे बेटर रहता है. अपने आप को काम रखना बहुत जरूरी है. यू हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड काम एंड believe that what treatment you are taking is going to work. That will really help because सारे endogenous hormones भी उसी तरह से sync हो जाएंगे. बिल्कुल राइट. बिकॉज अगर आप उसको, हमारे ब्रेन को थॉट्स ही इतने खराब दे रहे हो तो ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट आएगा. राइट. गूगलिंग द थिंग, हर चीज को गूगल करके वो और कंफ्यूज हो जाते हैं. देन दे रीड अबाउट कॉम्प्लिकेशंस और हालत खराब हो जाती है. तो बेटर है कि जस्ट लीव इट टू अस. वी आर ऑलवेज देयर. यू कैन आस्क व्हाटएवर क्वेरीज यू हैव एंड अपना आराम से. आई कीप टेलिंग देम वॉच मूवीज. अगर छुट्टी ले रहे तो एंजॉय. इट्स अ गुड ब्रेक. प्रेगनेंसी होने के बाद एंड आफ्टर डिलीवरी लाइफ इज नेवर द सेम. दिस इज एक्चुअली द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ. उसके बाद तो लाइफ ही बदल जानी है, तो एंजॉय इट. बिल्कुल. आई थिंक क्लिनिक्स को या सेंटर्स को बाहर एक बोल्ड लेटर में लिखवा देना चाहिए दैट व्हेन यू आर एंटरिंग दिस गेट प्लीज स्टॉप गूगलिंग. दैट शुड बी देयर. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग, ये सारे ऐसे वर्ड्स लोगों को शायद गूगल से ही पता चले हैं जो कि आज तक हमने कभी नहीं सुने थे. सीरियसली. Yes, so anxious. They want to know it as early as possible. मेरे को यूरिन ज्यादा आ रहा है, मुझे ये हो रहा है, मतलब हर चीज के लिए ना दे वांट टू कोरिलेट कि ये प्रेगनेंसी के सिम्टम है तो बस हो गया है. वी अंडरस्टैंड, वी आल्सो वांट दैट, बट थोड़ा सा काम. So we have one more query related to this only, जो हम बात कर रहे थे हमारा टेस्ट की. Nowadays doctor suggest to do beta HCG on day 9 or 10. How relevant it is? It is when we are doing a blastocyst transfer we can find out. In fact, जो एम्ब्रियो है वो तो सेकेंड थर्ड डे से ही HCG सिक्रीट करना शुरू कर देता है. तो दैट वी कांट रियली चेक, बट 9-10 डे पे करके देन यू हैव टू जस्ट फॉलो अप. आपको रिपीटेड ब्लड टेस्ट ज्यादा कराने पड़ेंगे. 9th डे पे मान लो 10-20 का लेवल आ रहा है, देन अगेन आफ्टर 2 days 3 days यू विल रिपीट. तो उतने प्रिक ज्यादा होंगे. राइट. प्रेगनेंसी है तो है, नहीं है तो नहीं. दैट इज व्हाट इट इज. तो बेटर है कि आप 15 डेज तक वेट कर लीजिए एंड कराओ एंड देन यू कैन गो फॉर अल्ट्रासाउंड इमीडिएटली once the level crosses 1000, 1500.
we can do an ultrasound and find out where it is located. So that is much more, I think, a better feeling that you did the test and you did the scan and the baby is there, so you're happy. Right. And Dr. Meenakshi, लेवल से I just thought कि कई बार बहुत लो लेवल्स होते हैं, कई बार बहुत हाई. तो कुछ लोगों का मानना है बहुत हाई लेवल हो गए, that means it's an indicator for ectopic pregnancy. So is it really so? नहीं, if you're having high level, generally it is twins or multiple pregnancy. Ectopic में usually low level होते हैं and then it doesn't double, it doesn't increase also fast. Okay. बहुत लो लेवल बायोकेमिकल प्रेगनेंसी हो सकती है कि कुछ तो रिएक्शन हुआ, थोड़ा उसने इम्प्लांट होने की कोशिश करी बट इट डिड नॉट सक्सीड, इसीलिए प्रेगनेंसी थोड़े दिन चली एंड देन इट जस्ट स्टॉप्ड. दैट्स बायोकेमिकल. राइट. एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग ओवर हियर इज कि आजकल कुछ केसेस में या कुछ डॉक्टर्स दे डू सक्सेसिव ट्रांसफर day 3 and day 5. What is your take on that? That is again related to the window of implantation. When we are not sure of when is the window of implantation, then doctors try to do that transfer one embryo on day 3 and then one on day 5. Day 3 is anyway going to stay in the uterus for 2 days. So if the window of implantation opens, say the next day, it can implant. Or if it's day 5, then if the day 3 doesn't reach day 5 in the body, we are putting another day 5 and that can implant. That is just to increase your chances by, covering most of the window of implantation. Okay. But that's all guesswork. We are just guessing and hoping that it works. Okay, fine. So because nowadays we are having queries related to this, that doctor has suggested this successive transfer. So क्या इससे हमारे chances बढ़ जाएंगे या इससे twin pregnancy भी हो सकती है? So all those kind of queries. Twin तभी होगी जब 2 embryos डालेंगे. Very rarely one embryo can split, but twins तभी होते हैं जब 2 embryo डालेंगे, mostly IVF में. एंड अगर दोनों एम्ब्रियो अच्छे हैं तो चांस होता है कि ट्विंस हो सकते हैं. 25 to 30% कपल्स में ट्विन का चांस रहता है आईवीएफ में. 70% सिंगल होगा. बिल्कुल. एंड हाँ जी, प्लीज. आप आजकल एक बहुत बड़ा मिथ है, आई डोंट नो, बट लोगों को लगता है कि अगर मुझे day 3 ट्रांसफर हुआ है एंड दैट टू सिंगल एम्ब्रियो, तो उसका तो चांस ही नहीं है प्रेगनेंसी देने का. कल ही पेशेंट डिलीवर हुई है, day 3 सिंगल एम्ब्रियो. That was the only embryo and we said let's put it, and she after 6 years she has now delivered a baby. So ऐसा कुछ नहीं है. Embryo has to be healthy and endometrium should be ready. आप day 2 पे डालो, day 3 पे डालो, day 5 पे डालो, doesn't matter. Day should match and endometrium should be ready. It will implant. Right. So we can say that yes, this positive. सब ट्रांसफर्स किए हैं and people have conceived. ऐसा कुछ नहीं है. Only thing by day 5 we get to know more about the embryo. कई conditions में होता है day 3 डाल देंगे, at least day 5. मान लो I have a PCO patient who has 15 embryos on day 3. अब मुझे उसमें से नहीं पता किस वाले को पहले डालूं, किसको बाद में डालूं. If I take it to blastocyst and which is a good blast, if I put, so her chance will increase. I can select the embryo properly. अगर है ही 1-2 embryo, तो it is always better to put on day 3. The chance of implantation is very good. Okay, right. So next time if your doctor is suggesting for you day 3 transfer, तो आप प्लीज पीछे मत हटिए ये सोच के कि मेरे साथ जो थी उसका day 5 हुआ और प्रेगनेंसी हो गई. It can happen with you also along with this day 3 embryos only. Dr. Meenakshi, what you suggest transferring while you were transferring this thing blastocyst? बहुत लोगों का मानना है कि 2 ट्रांसफर नहीं करने, ट्विंस नहीं चाहिए. तो what is your take? It is always 2 embryo transfer blastocyst or even single blastocyst is enough? Again, it has to be individualization of the case. For everything nowadays, it is individualization. We are not
following any blanket treatment. अगर पेशेंट की विश है कि मुझे एक ही चाहिए, उसके कंसेंट से वी विल पुट ओनली वन गुड एम्ब्रियो. एक भी अच्छा एम्ब्रियो है तो सिंगल बच्चा इज ऑलवेज बेटर. ट्विंस में सारी कॉम्प्लिकेशन 25% ज्यादा होंगी. अगर अबॉर्शन का रिस्क से 5% है सिंगलटन में, ट्विंस होंगे तो वो 25% होने वाला है. तो इसीलिए वो हर प्रॉब्लम तो ज्यादा होगी, बट यस गेन इज ऑल्सो मोर. यू आर गेटिंग 2 बेबीज. आपके अगर 7-8 साल से मतलब बच्चा नहीं हुआ और अब हो रहा है एंड यू ऑलरेडी 35, तो आई थिंक ट्विंस इज ऑल्सो गुड. वी ऑलवेज डिस्कस with the patient before that. If I'm doing a PGT, I'm doing PGT testing, I know which is a euploid, which is a healthy embryo, which is an unhealthy embryo, then I always suggest my patients to go for single transfer, because the chance of implantation is very high. 70 to 80% is going to implant, so it is always better to go for single. But if we have not tested and patient is okay with twins, then we can put 2 embryos. 70% will have single, 30% will have twin. So if they are okay with that ratio, we can even go for 2 blastocyst transfer. Blastocyst transfer, right. So next time choice आपकी होगी, and just please take suggestion of your doctor. And viewers, if you are in Gurgaon and you want to visit Dr. Meenakshi, please don't waste your time. Dr. Meenakshi is available at ART Fertility Clinic, Gurgaon Center. Just book an appointment, and yes, you can meet her, take her guidance, take her suggestions, and again continue with treatment with her. Dr. Meenakshi, next हमने बात की implantation failures, implantation success, and next is when we are ready for embryo transfer. एक सबसे बड़ी चीज जो सामने आती है, that is when you are entering the OT for transfer, आपका ब्लैडर फुल होना चाहिए. लोगों को लगता है कि बस मैं बाहर निकलूं तो किसी तरीके से मुझे वॉशरूम तक ना जाना पड़े, बिकॉज इट्स लाइक कि अगर मैंने यूरिन पास किया मेरा एम्ब्रियो ड्रेन आउट हो जाएगा. सो अगेन योर एक्सपर्ट सजेशंस, योर एक्सपर्ट पॉइंटर्स ऑन दिस. First of all, we need a partially filled bladder. We don't need a completely filled bladder until unless there are some specific cases. तो बहुत ज्यादा तो ब्लैडर फुल करने की जरूरत नहीं है. व्हाट आई यूजुअली टेल माय पेशेंट्स इज, जब आप सुबह उठते हो, पास यूरिन, एंड आफ्टर दैट यू हैव योर नॉर्मल व्हाटएवर टी, कॉफी, नाश्ता जो करना है आप करो, एंड जस्ट डोंट ड्रिंक एनी एक्सेसिव वाटर, बट डोंट पास यूरिन एज वेल. तो बाय द टाइम हम ट्रांसफर यूजुअली 12-1 बजे तक करते हैं, तो तब तक आपका ब्लैडर ऑलरेडी फुल हो जाएगा बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए, एंड दैट इज सफिशिएंट. पर हाँ, अगर बहुत ज्यादा है तो दे कैन पास पार्शियली एंड कीप इट. आई डोंट नो, वो भी थोड़ा मुश्किल काम है, बट ये दे कैन डू दैट. अब अगर मान लो बहुत ओवरफिल्ड है एंड शी इज नॉट एबल टू कंट्रोल इट, इट इज ओके टू पास यूरिन इमीडिएटली आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर. इट जस्ट डज नॉट मैटर. जो यूट्रस है वो ऐसा नहीं है, खुला नहीं है अंदर की कुछ गिर जाएगा. इट्स क्लोज, बोथ द वॉल्स आर अपोजिंग. तो हम जो भी बीच में डालेंगे वो चिपका ही रहेगा, अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं आने वाला है. तो आप आराम से जाओ, यूरिन पास करो, बिल्कुल मत घबराओ. वी इवन आस्क आवर पेशेंट्स टू वॉक बैक फ्रॉम द ओटी. हम उनको स्ट्रेचर पे वापस लाके लिटाते नहीं है, दे वॉक बैक आउट ऑफ द ओटी. सो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन डू दैट. कोई घबराने की बात नहीं है. इस पे भी बहुत रिसर्च हो चुकी है कि एकदम से उठा दो एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद तो क्या प्रेगनेंसी रेट कम हो जाता है. वॉक बेड रेस्ट वर्सेस नो बेड रेस्ट आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर, उसमें भी प्रेगनेंसी रेट सेम है. आपको कोई जरूरत नहीं है उसको आधा घंटा 1 घंटा लिटा के रखने की. आई थिंक व्यूअर्स, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट रह गए हैं तो प्लीज इस सेशन को दोबारा जरूर देखिएगा. दिस सेशन विल बी सेव्ड ऑन दिस लिंक ओनली. बार बार देखिए, डाउट्स हैं जो प्लीज उसको क्लियर कीजिए, बिकॉज वी ऑल नो दैट दिस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, IVF ट्रीटमेंट, इट इज रियली हार्ड. ऐसा नहीं है कि एक क्विक में एकदम से सब कुछ हो जाएगा. आपको टाइम देना पड़ता है. वी नीड पेशेंस. बहुत सारी मेडिसिन हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं बॉडी में. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू क्लियर योर डाउट्स, बट अगेन प्लीज ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स विद योर ओन डॉक्टर, नॉट विद गूगल, बिकॉज गूगल ने डॉक्टर पढ़ाई नहीं की है, हमारे डॉक्टर्स ने ही की है. Dr. Meenakshi, one query related to endometrium thickness we have.
if we are going for day 3 transfer or we are going for day 5, तो what should be the ideal thickness? क्या दोनों day 5 और day 3 की thickness should be different या दोनों की ही same होनी चाहिए? नहीं, thickness is standard. Day 3, day 2, day 5 जो भी डालना है, thickness is standard. 9 to 12 millimeter is ideal. 7 to 14 millimeter चल जाएगी, मतलब plus minus 2 रहता है. 7 millimeter में भी pregnancies होती हैं, the chance is very good, but 9 to 12 is ideal. And for any transfer, it should be that much. आप ये मान के चलो, जब हम प्रोजेस्ट्रॉन स्टार्ट कर देंगे, ईस्ट्रोजन जब दे रहे हैं तो एंडोमेट्रियम ग्रो करती है, वो फर्स्ट हाफ में देते हैं. जब हम प्रोजेस्ट्रॉन ऐड कर देंगे बिफोर ट्रांसफर, तो एंडोमेट्रियल थिकनेस ग्रो करने वाली नहीं है, वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, इनफैक्ट थोड़ी सी छोटी भी हो जाती है कईयों में, तो वो ग्रो नहीं करने वाली है. तो वी हैव टू डिसाइड ऑन व्हेन टू स्टार्ट प्रोजेस्ट्रॉन based on the thickness and not depending on the day of transfer. Okay, right, understood. So next time if you are going for day 3 transfer, तो ऐसा मत सोचिए कि 5 mm में चल जाएगा, और अगर day 5 जाना है तो मुझे 13 mm ही लेना है. डॉक्टर मीनाक्षी, अगर ज्यादा हो जाती है, as you said that it should be between the limit, then what? तो ऐसे केसेस में आप साइकिल कैंसिल कर देते हैं, या इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी अंडरलाइंग कंडीशंस और सो? पहली बार में तो कैंसिल कर देते हैं, एंड देन वी डू एंडोमेट्रियल बायोप्सी टू फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज सो थिक. व्हेनेवर द थिकनेस इज 14-15, वी आर वरीड अबाउट हाइपरप्लेजिया. कहीं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया तो नहीं है, मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ प्री कैंसरस कंडीशन, तो उसको रूल आउट करते हैं. अगर ऐसा कुछ नहीं है, लाइनिंग ठीक थी, हिस्टोपैथोलॉजी ठीक थी, देन नेक्स्ट टाइम वी स्टार्ट विथ लोअर डोज. अगर 3 गोली खिलाई है तो 2 गोली खिलाएंगे, 2 खिलाई है तो 1 खिलाएंगे, ताकि धीरे धीरे पतली बने. बहुत ज्यादा मोटी लाइनिंग से भी क्या है, आप देखो ये यूट्रस की वॉल है, इसके ऊपर अगर इतनी मोटी लाइनिंग बनेगी, उसके ऊपर एम्ब्रियो हम डालेंगे, उसको इतना डिस्टेंस से ऑक्सीजन मिलेगा. अगर थिकनेस मोटी हो जाएगी, इट्स लाइक इडीमा, तो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो को कम मिलेंगे, वो इम्प्लांट नहीं होगा. बहुत पतला होगा तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाती है उसकी, वो भी डैमेज करती है, उसकी वजह से भी इम्प्लांट नहीं होता. इसीलिए एक आइडियल थिकनेस बहुत जरूरी है, ताकि परफेक्ट ऑक्सीजन टेंशन, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सब उसको मिले और वो इम्प्लांट हो, ना पतला ना मोटा. राइट. और the situation is this कि अगर सारी चीजें ठीक हैं, अगेन वेदर इट इज फ्रोजन और फ्रेश, लेकिन आपका एंडोमेट्रियम थिकनेस ठीक है, अंडरलाइंग कंडीशन कुछ नहीं है, देन प्रेगनेंसी जरूर होगी. सो डॉक्टर मीनाक्षी, एनी पार्टिंग नोट, इम्पॉर्टेंट पार्टिंग नोट हेयर फॉर आवर व्यूअर्स, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन्स हैं हर चीज को लेकर, और अगेन कुछ चीजें हम खुद से सोचते भी हैं, कुछ चीजें हम दूसरों की सुन के मानते भी हैं. तो व्हाट यू सजेस्ट व्हेन वी आर गोइंग फॉर ट्रांसफर? I feel first is you have to de-stress yourself. You are trying your best. You have such a beautiful platform like Fertility Dose where you can ask your queries and interact with other people. I think sharing your problems really help in reducing the burden of it. तो उससे भी बहुत स्ट्रेस कम हो जाएगा. ओपन अबाउट इट. इतना कई बार होता है कि हम किसी से, अपने मम्मी पापा तक को ये बात नहीं बताते हैं, और फिर अंदर ही अंदर ट्रीटमेंट लिए जा रहे हैं, वो फेल हुए जा रहा है, और किसी को बता नहीं रहे, और बर्डन और बढ़े जा रहा है, मेंटल प्रेशर बढ़े जा रहा है, फाइनेंशियल तो दूर की बात है उसी में. तो आई थिंक यू शुड शेयर योर प्रॉब्लम्स, जिससे डिस्ट्रेस होगा, एंड दे आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, एंड द रिजल्ट इज गोइंग टू बी बेटर. And whatever doubt you have, even if you think it's a silly doubt, please ask your doctor. Feel free to ask. कुछ पता ही लगेगा. अपने आप से सोच के परेशान मत हो. और now we have wonderful treatment possibilities, improved gonadotropins. We have technology like PGTA, ERA, and where we can improve the results. So make use of all that, and we can have very good results. आज से 10 साल पहले की बात करूं तो प्रेगनेंसी रेट्स 45-50% होते थे, तो बहुत लगता था, लेकिन अब 65-70% बहुत easily clinics are able to reach. So that is because of advancement in IVF. So they are good results, and I think you should reach to a doctor also at a right stage. Only thing which matters in fertility is your age.
Once you Right. cross the age, even doctor cannot help you. So reach to them at the right age. They might, it's not that कि fertility doctor है तो IVF ही कर देगा, एक ये भी notion रहता है हमारे पास, बिल्कुल इसलिए भी कई बार डायरेक्टली पेशेंट नहीं आता, उनको लगता है कि नहीं मैं उनके पास जाऊंगी तो IVF करती है, मेरी IVF की प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. वी आर हेयर टू जस्ट हेल्प यू, एंड वी कैन इवन विद मेडिसिन, विद जस्ट a simple diet change or exercise, you can conceive. Or sometimes you have simple infection which, if it's treated, you will conceive. So you should be open about it. Approach to your doctor at the right time and right age, and share it with your peers or with your family, at least with your parents. I think that will really help you. right. And we always are here as your dost to solve your queries, to help you out, and even we can help you in selecting the right doctor in your city. Dr. Meenakshi, last question. Is your center started doing donor cycles also? अभी हरियाणा के अंदर we don't have a board. Basically, Achha, they okay. have given us extension of another 3 months. So we are looking forward to it. Okay, so we have one query related to this, that yes, ART Fertility Gurgaon Center, they are doing donor cycles. If you are interested, please let us know. You have our number and you have our official email also. Please send us a mail. और अगर आप चाहते हैं तो ये comment box में you can just write that yes, you want donor cycle. We'll directly connect you with ART Fertility Clinic or Dr. Meenakshi. Dr. Meenakshi, thank you so much for joining today and wonderful session. बहुत सारी चीजें थी जो कहीं ना कहीं हम अंदर ही अंदर सोचते हैं. डॉक्टर से पूछते हुए लगता है कि डॉक्टर क्या सोचेगा, इतना स्टूपिड सवाल, हमें इतना भी नहीं पता. आज हमने वो खुल के सब चीजें आपसे पूछी एंड रियली इट वाज इंटरेस्टिंग सेशन, बहुत लाइवली, और आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें, सारे डाउट्स क्लियर करे. And again, Delhi NCR people, please do visit ART Fertility. They are here to help you out. Thank you, Dr. Meenakshi. Thank you so much for joining us. Thank you. Thank you.